Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Peenmal. Today, I will deliver second lecture on Parthenogenesis. आज हम बात करेंगे अनिषेक जनन के दूसरे भाग के. Now, what is parthenogenesis? Just to revise that in the case of certain lizard like Lizarda saxicola, only females occur in the environment, males are unknown. So parthenogenesis is a form of asexual reproduction in which females produce eggs that develop without fertilization. Parthenogenesis is seen to occur naturally in some invertebrates, along with several fishes, amphibians, and reptiles, as well as in many plants. There are no known cases of parthenogenesis in mammals. Now, in my previous lecture, I discussed about the haploid parthenogenesis, that is the Thelytoky. Today, we will discuss about the diploid parthenogenesis. Let us take the example of waterflea daphnia. As you can see in this slide, there is development of a fertilized female, and this fertilized female has resting eggs with a protective case which forms the female after diapause, female producing the eggs. These eggs, if remain unfertilized, develops into the male through the diploid parthenogenesis. There is amphigonic reproduction, production of male which fertilizes the female. The second case, there is formation of the female, and these females are responsible for forming the fertilized egg. And the third case, the development of parthenogenetic females. So there are three lineages in the case of waterflea where there is a clear-cut diploid parthenogenesis is present. Now, this is the comparison of what we have just studied in the previous slide. The fertilized eggs are larger in size while the unfertilized eggs are smaller. Fertilized eggs are slow in developing and the unfertilized egg develop very fast. The fertilized eggs are yolk rich while the unfertilized egg which are laid in summer has less amount of yolk. The fertilized egg remain dormant through the winter. It means there is a period of diapause, and after fertilization the male produces females. Now, the production of some males and some female. In the case of diploid parthenogenesis, the young individual develop from the unfertilized diploid eggs. The diploid parthenogenesis is classified into two types, the ameiotic and meiotic Thelytoky. The ameiotic Thelytoky, in some animals during the oogenesis, the first meiotic division, which is actually the reduction division, is omitted, and the primary oocyte directly undergoes the second meiotic division, which is mitotic in nature, and due to absence of this meiosis, it is known as ameiotic or apomictic parthenogenesis. कहने का मतलब ये है कि डिप्लॉइड अनिषेक जनन दो प्रकार का है, जिसमें एक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है और एक में अनुपस्थित होता है. एमियोटिक थैलीटॉकी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित रहता है. कहने का मतलब ये है कि जैसा हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन की दो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, एक जिसके दौरान रिडक्शनल डिवीजन होता है और दूसरा जो समसूत्री विभाजन के समान होता है. यहाँ पर एमियोटिक थैलीटॉकी के अंदर क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन का पहला भाग है जिसमें वास्तव में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, वो अनुपस्थित होता है, और सीधा सा जो प्राइमरी oocyte है वो सेकंड अर्धसूत्री विभाजन, मतलब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या करता है, एक डिप्लॉइड भ्रूण का निर्माण
करता है। इस तरह का जो अनिषेक जनन है उसको एमाइटोटिक या एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जो हमने अभी डेफनिया के अंदर भी देखा, वीविल्स में भी होता है और लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स के अंदर भी पाया जाता है। The meiotic thelytoky, there are certain eggs which develop by usual process of oogenesis involving meiosis. It means the reductional division is there, but some anomaly occurs after the reductional division, which results in diplosis. It means doubling of the chromosomes, and this type of parthenogenesis is known as automictic parthenogenesis. The anomaly can occur due to the following two ways. So we were talking about the meiotic parthenogenesis. The two ways which involves, the number one is the restitution and the number two is the auto fertilization. जहां समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम भाग है और समसूत्री विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय भाग है, जब इस तरह की दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, पर जो मियोसिस फर्स्ट है, जो अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था है, उस दौरान कोई ना कोई असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी नहीं हो पाती और समसूत्री विभाजन जो गुणसूत्र की संख्या सामान्य रहने के कारण जो भ्रूण का निर्माण होता है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य गुणसूत्र की संख्या के समान ही होती है। Now let us take the example of the restitution. In the case of restitution, the first maturation division of the primary oocyte is incomplete. Karyokinesis, which is the nuclear division, forms a nucleus of the secondary oocyte and a nucleus of the first polar body or the podocyte. But it is not followed by the cytokinesis, that is the cytoplasmic division. As a result, the chromosomes of both daughter nuclei arrange themselves on the equator and undergo second meiotic division. This results in the formation of a diploid ovum and a diploid polar body or the podocyte. The diploid ovum develops into the embryo without fertilization, as in the case of certain insects belonging to order Hymenoptera and Lepidoptera. रेस्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, जो प्राथमिक oocyte है, उस प्राथमिक oocyte के अंदर जो केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन के पश्चात एक द्वितीयक oocyte और एक पोलर काय का निर्माण होता है। जो प्राथमिक पोलर काय और द्वितीयक oocyte है, इनके अंदर केंद्रक विभाजन होने के पश्चात जो कोशिका द्रव्य विभाजन होना होता है वो नहीं होता। फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों जो केंद्रक हैं उसके जो गुणसूत्र हैं वो मध्य में इक्वेटर पर आ जाते हैं और जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन है उसमें भाग लेते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, एक डिप्लॉइड अंडे और एक डिप्लॉइड पोलर काय का निर्माण होता है और ये डिप्लॉइड जो अंडा है, ये डिप्लॉइड अंडा अनिषेक जनन के द्वारा बिना निषेचन हुए एक भ्रूण के अंदर विकसित होता है। कुछ जो कीट हैं गण हाइमेनोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा, उनके अंदर हमें इस तरह का अनिषेक जनन दिखाई देता है। Now the second anomaly, the auto-fertilization. In this process, the meiosis proceeds normally up to the formation of secondary oocyte and second polar body. But the podocyte is not separated from the ovum. Instead, its nucleus unites with that of the ovum or oocyte and the diploid number of chromosomes is achieved. It gives rise to a parthenogenetic female. जो स्व निषेचन वाली प्रक्रिया है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन सामान्य रूप से होता है, उसके बाद जो समसूत्री विभाजन है वो भी सामान्य होता है, परंतु जो द्वितीय पोलर काय है वो अंडे से अलग नहीं होती, बल्कि इसका केंद्रक क्या करता है, जो ओवम या अंडा है
उसके केंद्र का निषेचन करता है, इसलिए इसे स्वनिषेचन बोलते हैं। फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड हो जाती है और जब इसमें अनिषेक जनन होता है तो ये एक डिप्लॉइड मादा को उत्पन्न करते हैं। It is most commonly observed in a brachiopod crustacean which is present in the saline water. Example is Artemia salina. खारे जल के अंदर पाया जाने वाला एक ब्रैकियोपोड क्रस्टेशिया जिसके अंदर इस तरह का अनिषेक जनन हमें दिखाई देता है। This is the life cycle of Artemia salina. You can see the stable environment, the osmolar aggregators are present, presence of juvenile, the male and female, the mate choice is irrelevant, unpredictable environment, the gene bank cyst hatching, and all these cases are common in the Artemia salina. Now the second part, the artificial parthenogenesis. अब हम बात करेंगे कृत्रिम अनिषेक जनन के बारे में। In many animals, it has been demonstrated that the ripe eggs can be incited to start development by certain treatment, and this phenomenon is known as the artificial parthenogenesis. कृत्रिम रूप से हम कुछ परिपक्व जो अंडे होते हैं उनको उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फलस्वरूप उनके अंदर बिना निषेचन हुए जो परिवर्धन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। The examples from the sea urchin eggs. The unfertilized sea urchin egg can be made successfully by treating the eggs with various substances. It can be the hypertonic or hypotonic seawater, the various salts which includes the chloride of potassium, sodium, calcium and magnesium, the weak organic acids such as butyric acid, lactic acid or oleic acid, the fat solvents like ether, toluene alcohol, acetone and benzene, and urea and sucrose. These are certain substances or the chemical agents which can induce artificial parthenogenesis in sea urchin eggs. Temperature shock, a physical agent, it means transferring the egg for a short while to either very cold, that is 0 to 10 degrees Celsius, or warm, that is 32 degrees Celsius water, can also induce the artificial fertilization. The electric induction shocks, again the physical agent, the ultraviolet rate, again a physical agent, then the shaking the eggs in ordinary seawater, a mechanical or physical agent, then treatment with chloroform or strychnine, a chemical agent. So these are certain physical and chemical agents which can be used to induce artificial fertilization in unfertilized eggs of the sea urchin. Likewise, in the case of frog, we can also induce the parthenogenesis by pricking with the needle, that is a fine glass needle, and better results are obtained if the needle be smeared with blood or be contaminated by cells from the other tissue. जो मेंढक के अंडे हैं उनके अंदर एक बहुत पतली कांच की बनी हुई सुई के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अनिषेक जनन को प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं अगर यह जो कांच की सुई है यह किसी रक्त या दूसरी कोशिकाओं से द्वारा संक्रमित होती है तो। Attempts have also been made to induce parthenogenetic development in eggs of some mammals, but results are futile. स्तनधारियों के अंदर भी प्रयास किए गए पर अनिषेक जनन में कोई सफलता हासिल नहीं हुई. This slide is showing that how we are using the micro injection to induce artificial parthenogenesis in frog. Now the significance, it is a means of reproduction to ensure the continuity of race in the absence of sexual reproduction. It is very rapid multiplication because it happens in a short span of time. It eliminates the disadvantageous character. It checks the non-adaptive combination of genes. It is responsible for persistence of advantageous characters as the crossover is absent. It is responsible for sex determination, which we have already seen in the case of bees, ants, and many insects. Males are haploid, females are diploid. Then it produces the polyploid. It prevents the sterility in the races. It prevents the wastage of energy on the sexual reproduction. And
Finally, it checks the appearance of useful